अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत जोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से। This is a video of a woman from Bihar's Bhagalpur whose husband passed away due to COVID-19. She alleges that when her husband was getting treated for COVID-19 infection, she was sexually assaulted by the staff. Not just this, she also accuses the hospital for medical negligence and for selling oxygen in black. वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदे उन्हीं से, हम भी खरीदे सर। क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। Another shocking and heart-wrenching incident has come from Bihar and UP. Close to 100 dead bodies were found floating in river Ganga near Buxar in Bihar and Ghazipur in UP. Some claim that ambulances dumped these bodies into the river, while some claim that locals were behind this. This is a tragedy, something that we have not seen in the past. This is particularly sad because in this way we are denying them the dignity in death, something that all of us deserve. It also speaks volumes about how the administration is subjecting people to inhumane neglect and apathy even after the death. पहले हम उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए और मरने के बाद उन्हें रिस्पेक्टफुली क्रीमेट भी नहीं कर पाए. This is a crisis where thousands of people dying every day. बट ये खाली एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है. ऐसे केसेस हमें बताते हैं कि कंट्री में इस टाइम एक मॉरल क्राइसिस भी है, बिकॉज देयर आर मेनी सच केसेस व्हिच आर बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री. लुक एट दिस केस फ्रॉम यूपी's बागपत. 7 people have been arrested for allegedly stealing clothes and other items from dead bodies from a local crematorium. Yes, from the dead bodies. Let that sink in. पुलिस ने इनके पास से 127 कुर्तास, 140 शर्ट्स और 52 साड़ीज रिकवर किए हैं. पुलिस के अकॉर्डिंग ये इन्हीं कपड़ों को वॉश करके मार्केट में नए की तरह बेच देते थे. एंड ऑल दिस डजंट स्टॉप हियर. अ वुमन इन दिल्ली क्लेम दैट हर फ्रेंड सिस्टर वाज आस्क्ड बाय अ नेबर टू स्लीप विद हिम फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर दैट शी नीडेड फॉर हर फादर. और ये सब यहीं खत्म नहीं होता. द एम्बुलेंस चार्जेस इन दिस क्राइसिस will shock you. Patients who should be charged around 1500 to 2000 per 10 kilometer are being charged 5 times the base price. One such report highlighted how a patient was asked 50,000 rupees for a ride to a hospital in Gurgaon which was 44 kilometer away. 50,000 for 44 kilometers. ये black marketing तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि Delhi government had to cap the prices of ambulance for 1500 for 10 kilometers and 100 rupees per kilometer beyond that. But we all know that in times of an emergency, the patient's family is ready to do whatever and pay anything to save a patient's life. और इसी का तो फायदा उठाकर लोग मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर किसी भी बेसिक चीज को हाई से हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आर रिपोर्टेडली बीइंग सोल्ड एट 1,50,000 rupees when the actual cost is somewhere between 40,000 to 60,000 rupees. Remdesivir, which usually costs 3,000 rupees, is being sold at 40,000 rupees. पल्स ऑक्सीमीटर से लेकर फ्लो मीटर के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. Even the Delhi High Court made a remark that our moral fabric has been dismembered to a great extent. ये सब केसेस हमें बताते हैं कि इंडिया में एक मॉरल क्राइसिस है. These are not normal times. This is a pandemic. And when we behave this way with others now, it questions the humanity of the people living in this nation. But there is a ray of hope. There are thousands of people who are coming forward and helping those who really need help. They are using their influence on social media and their own resources to help people. These are the people who tell us that this is a humanitarian crisis and not a crisis of humanity. And this is exactly what we need to do. We need to come forward, amplify those voices who really need help, and report those who are taking advantage of the needy. If you like this video, do not forget to drop in a like and subscribe to India Times.